celebrities are getting into real estate. So what is your plan into? Are you getting into? No plans as of now. But yeah, I find it very interesting and exciting, real estate by itself. So I don't know. Never say never. I could possibly in the future. So where you are already in Rev Danda, what you said, you have a small cottage kind of. So even that is a blooming area. So getting into that in future. Yeah, Lonavala actually I prefer that. Revdanda is a little far off, so I don't end up going that often. But Lonavala is a better bet around Lonavala. Those are the spaces that interest me overall as a personal investment, and also from people from Mumbai, that would be a great space to be in. There's already lots being done there, but it still holds potential in my opinion. Yeah. How different will be your project than others? My project? If you're coming up. We are not talking projects here. Yeah, it's way off. Okay, thank you. जो रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है, तो मतलब आप भी इन फ्यूचर मतलब ऐसा कुछ करेंगे? जी, रियल एस्टेट टाइकून 10 साल के बाद मैं ही रहूँगा, और कोई नहीं रहेगा। देखिएगा। सलमान, एक ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद एक ब्रांड को लेके आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं? एक ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद? हाँ, आपकी मतलब कैसे देखते हैं आप ब्रांड को एंडोर्स करने से पहले कोई सर्च होता है, किस तरह से देखते हैं? मैं ब्रांड को ऑफ कोर्स एक देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन वैल्यू दैट दे आर प्रोवाइडिंग टू द मार्केट एंड सर्टेन स्टैंडर्ड्स दैट दे फॉलो इज व्हाट आई लुक इनटू, एंड देयर आफ्टर आई जस्ट होप एंड प्रे दैट इट इज रिवाइव्ड फॉर द सेकंड ईयर. Salman, one of Indian soldier is killed by the terrorists yesterday. What do you want to say about them, in our Indian soldiers? I just want to say that my sympathies are with the family, and I'm glad that he gave his life while performing his duty, and I salute to him and have absolute honor and extremely grateful, me and my entire family and the whole of India, for the services that he's provided us. Salman, do you really think कि पाकिस्तान एक्टर जो बॉलीवुड में हैं उन्हें भी बॉलीवुड छोड़ के पाकिस्तान जाना चाहिए, जैसे सलमान ने स्टेटमेंट दिया है इसको लेकर? फ़िलहाल जो माहौल है उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि हमें हमारे देश के लिए वी शुड स्टैंड अप फॉर इट. इस टेंशन भरे माहौल में जहाँ सरहदों पे इस किस्म की लड़ाई चल रही है, I think as the people of this country, from whichever walk of life we have to stand up for our nation. And unfortunately, I understand that I am an actor, and I understand that art is all that we are concerned with, and love is primarily the message we are sharing. But at the same time, our friends from Pakistan who are actors in various capacities that they may hold, maybe during this time it might not be such a good idea, because our soldiers are laying their lives out there on the border, and we cannot be supporting art at this point of time, which is a very important part of society. But depending on the situation in the country at the time, in the future maybe things get easier and we sort out our differences, they're most welcome to be back again. Thank you so much. Thank you. जिस तरीके से आज के टाइम एक आखिरी सवाल कर लेते हैं मेरे भाई. सर, जिस तरीके से आज के टाइम में बच्चों के हेल्थ एंड इश्यूज़ को लेके आज के टाइम में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी तरीके से सर एक इवेंट होने वाला है, सर रनिंग इवेंट मुंबई जूनियर मैराथन. सो सर आप क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड के? कुछ नहीं कहना चाहूँगा दोस्त. थैंक यू वेरी